Hello students, our today's topic is outgoing payment. For showing outgoing payment, we can go by transaction code F-53, SAP S accounting, financial accounting, accounts payable, document entry and outgoing payment post. हमने डाउन पेमेंट दिखाया था तो उसका इन्वॉइस भी बना लिया, डाउन पेमेंट भी दिखा लिया, क्लियरिंग का एंट्री भी दिखा दिया. अब यहाँ पर हम आउटगोइंग पेमेंट शो कर रहे हैं. उसके लिए हम जाएंगे F-53 सैप में जाते हैं. Come back and accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, down payment. Okay, we have to document F-53. Document entry, outgoing payment, F-53. Enter the amount 29/5/2024. Enter your bank. Account, GL account, then select your vendor, and then click on process open item, press enter, again press enter. So we will clear the KA document with our KR document. Double click on it. And then come back and we will show payment by crediting GL account. Press enter. Enter the pending amount, that is 29/05/2024, and then click on post button. Document display, and then click on general ledger view. We can see our entry. Now come back. We will check the report by FPL1N. FPL1N open item की जगह आपको देना है cleared item and then normal item. ये देखो हमारी एंट्री जो क्लियर हो चुकी है. नाउ कम बैक एंड क्लिक ऑन स्पेशल GL transaction and then all items. Click on execute. So देखो यहाँ पे हमारी एंट्री अभी भी क्लियर नहीं है, हमारे पास अभी भी 200 रुपये पेंडिंग है. फॉर दैट वी कैन क्रिएट अ न्यू इनवॉइस एंड वी विल पे बाय दैट.